अरे भाई व्हाई आर यू गे? अबे सैम ऑल्ट मैन के डिसाइपल, ये सब तू मुझसे मत तो पूछ। तू है ना वो। तू बोलते था ना आई एम सैम, हो गया खत्म। अबे मैं साई टामा बोल रहा था, वो लोगों ने उसको सामा कर दिया छोटा करके। भाई सैम तो एक्चुअली ऑल्टमैन निकला। पूरे पूरे टेक कम्युनिटी के लिए थोड़ा सोलो करना डिफिकल्ट है। क्या क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। सॉलो। ये ठीक। डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि सैम ऑल्टमैन भी ऑल्ट निकला। क्या बोल रहा हूँ मैं तेरे को? बट बट क्यों भाई? सैम ऑल्टमैन भी ऑल्ट निकला। भाई हम लोग कोई होमोफोबिक नहीं है, ठीक है? मैं पहले ही बता दूं, विवान तो बिल्कुल होमोफोबिक भी क्या नहीं होता है। है? नहीं, अभी फंडामेंटल्स में जाएगा, मतलब जो लोगों को समझ आता है उस हिसाब से हम नहीं है। बट विवान, तू मेरे को ये बता, वो सब छोड़। तू मेरे को ये बता कि तेरे को कहाँ से मिली वो फोटोज? फॉलो तो उसको मैं करता हूँ, और उसके साथ तो मेरी कहानी भी है कि 2017 में मैंने एक पॉडकास्ट देखा था। पॉडकास्ट है, पता नहीं क्या, वाई कॉम्बिनेटर का इंटरव्यू था विद इलॉन मस्क। ठीक है, इट वाज सच एन अंडररेटेड इंटरव्यू। आई थिंक जब मैंने देखा था 7,000 व्यूज थे उस पे, प्रोबेबली। एंड दोनों बात कर रहे थे, इलॉन मस्क ऑन हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर ऐसे करके। अब तो बहुत फेमस वीडियो हो चुका है, बट उस टाइम में मैंने देखा है, मैंने बोला ये बंदा कौन है जो इसकी इससे इंटरव्यू ले रहा है। तो मैंने जाके उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। एंड मैंने उससे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया हुआ है, पूछा भी हुआ है क्वेश्चंस अपने। एंड ही एक्चुअली आंसर्ड इट बहुत टाइम बाद। एंड कल क्या मेरे को पता क्या पता क्वेश्चन लगा पूछा कि ये तूने? वही बंदा है जिसने, जो ओपन है वाला है। मेरे को एक्चुअली नहीं पता था, ये कोई क्वेश्चन पूछा था। 17 ईयर ओल्ड था मैं, तूने बोला 17 का कि था मेरे ये। एप्लीकेशन वाई कॉम्बिनेटर की थोड़ी थोड़ी पास करा दो ना प्लीज। प्लीज। नहीं, मैंने उससे कुछ ऐसा पूछा था कि कुछ नहीं, कुछ ईलॉन से कुछ पूछा था, एंड देन ईलॉन ने उसको आंसर दिया था। सो आई वाज लाइक, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने उसका अच्छा सा एक क्वेश्चन पूछा था एंड ही आंसर्ड वेरी वेल। छोटा सा आंसर दिया था, बट उस टाइम में मेरे को याद है उसने मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। एंड आई वाज फॉलोइंग हिम उस टाइम पे। एंड अब मेरे को कल पता चला कि मैं उसकी फोटोज देख पा रहा हूँ मैरिज वाली, और मैं उन एक्सक्लूसिव 5,000 कुछ लोगों में से जो देख पा रहे हैं। एंड या, तो तू बता कैसा लग रहा है तेरे को कि उस बंदे की शादी होगी जिससे तू प्यार करता था? अबे चन्ना मेरे यहाँ गया तूने। अबे वी हैव अच्छा टॉपिक है ये हमें स्टार्ट करने का। उसके पहले हेलो एवरीबॉडी। हम 10 एपिसोड कर चुके हैं 3 साल के होराइजन में। 3 साल में हमने, ये हमारा ओएमटी का थर्ड एपिसोड है। वन मोर थिंग। एंड हम्म। आज हम बात करने वाले हैं गे मैरिज पे। नहीं। बता वाई आर। वाई आर यू? नहीं तो नहीं, हम आज हम बात करने वाले हैं, एक एक पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप हमें जो डीएम करते हो, हम वो क्वेश्चंस लेंगे डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास टॉपिक्स नहीं है बात करने के, तो आप हमें देते रहो। एंड एक्चुअली इसको और मेरे को तो टॉपिक्स भी नहीं लगते बात करने के, हम कुछ भी गार्बेज बात कर सकते हैं लिटरली। जो रिकॉर्ड बटन दबाते से पहले जो बातें होती है वो हम शेयर कर दिया तो जेल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है विवान के लिए स्पेशली, पता नहीं वो तेरे को क्यों नहीं भेज पाया, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी शायद। तो उसने पूछा है कि फर्स्ट एपिसोड में, मतलब सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड, कौन सा था वो, एट्थ एट्थ एपिसोड था। उसमें हमने बोला था दैट यू सेड दैट यू वर्क एवरी वेकिंग आवर। एंड ही रेड इन द इलॉन मस्क बायोग्राफी बाय वॉल्टर आइजैक्सन कि Elon Musk admitted that relation and any kind of relationship is not his cup of tea, or it can't be maintained in any capacity, because he works so much that most of his time goes into his work, and most of his time goes into extinguishing fires at SpaceX and Tesla mostly. So how how do you maintain your relationship? So how do you basically balance your career and relationships, even though career is a word that I absolutely hate? But yeah, that's for a for better or worse, that's what people understand. So या आई मीन योर what is your योर thing on this? योर ड्यूटी, योर जॉब, योर Hmm. वर्क, हाउ डू आई बैलेंस इट? तेरा तेरा लिए क्वेश्चन है, तू बता अपना पर्सनल।
हाँ, All kind like of relationships. Yeah. Mm. three kind of like I think if you want to understand this, we have to like think from the first principles of a relationship, right? Bucket में डालते हैं. एक है romantic relationship, एक है family relationship, the loved ones that you're knitted with, Mm. and the third one is a relationship with yourself. Right. So if I talk particularly about उस लास्ट थर्ड वन को मास्ट नहीं, बोल बोल। hust, हंस दो मैं। हाँ। तो हाँ, the way I see it, जब मैंने ये कहा that I work at every waking hour, that means every element of my life I see it as work. There has to be a time defined to it. There has to be uh, a segment, a bucket attached to it, so that I know exactly when to switch context. And that is what I mean by I work at every waking hour. Because कोई भी relationship maintain करना वो काम से कम थोड़ी है. You need to understand this. It might sound very cliche, but uh, किसी भी रिलेशनशिप को आप अगर ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा टेस्ट करोगे, यानी जीरो एंड वंस में लेके जाओगे ना, या तो ये है या तो ये है. किसी भी चीज के लिए रिलेशनशिप में या तो सही होगा या तो गलत होगा. इफ दैट इज बिन योर लाइन ऑफ थिंकिंग, देन यू आर रियली लिविंग अ delusional लाइफ. दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाट आई फील. आई फॉलो दैट. डोंट हैव टू बी वेरी delusional when it comes to कि मुझे यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है, मैं टाइम कैसे दूँ. सो इफ यू आस्क मी how do I deal with it? I have, so the people that are with me, the close ones, my romantic relationship, my family relationship, the relationship with myself, I have compartmentalized by making them understand and accept the availability and the context switching that might happen throughout the day for me. So it is not that in a romantic relationship I have to leave everything and just focus on the call it more like a multi-vitality kind of behavior, where if I am intense about my work, I'm intense in my relationships as well. जितना डेडिकेशन, जितना फोकस, जितना ऑब्सेशन से मैं अपने काम के टूवर्ड्स फोकस करता हूँ, उतना ही ऑब्सेशन, उतना ही इंटेंसिटी, उतना ही हार्डकोर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप अपने साथ भी वैसे ही मेंटेन करता हूँ. सो बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में वो इंटेंसिटी हमेशा ही लाइक ऑन द टॉप रहती है. देर आर टाइम्स व्हेन इट बैकफायर्स because I'm furious about something, and then context switch. Yeah, I'm in some different scenario, but the intensity still stays. So it backfires where uh, Mm. my loved ones inform कि this is where what is happening, this is what I feel, this is how it is being perceived to us. So can you just normalize your intensity? So I think अगर मुझे इस चीज को बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करना होगा ना, तो इट कुड बी इन अ वे कि my romantic relationship, my family, the relationship with myself, they all know and have accepted uh, they've accepted the nature, that kind of, that obsessive nature of mine completely. And when they have, now they know how to deal with it. So at times when I say that I work at every waking hour, so people have to deal with that. And that is more like a that is more like a move for me. That is how it can be dealt with. मतलब there is no other way around. आप इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते. सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला नैरेटिव तो इसमें डाल ही नहीं सकते कि आपका काम अलग होना चाहिए, आपका ये अलग होना चाहिए. आई एम नॉट लाइक दैट. I feel Mm. ki if they understand what you do, they'll find a way to come close to you. There has to be, matlab, it needs to be as smooth as anything else. Matlab, if you are loving someone, तो it happens unconditionally. And unconditional में कोई boundaries या कोई territory नहीं होती. It is like, अच्छा, you're working, I'll sit here, you work, I'll be there. That ministry of presence is my kind of romance with everything, with my family, with my friends, with my uh, loved ones. So yeah, pretty much. And I think Elon Musk ने जब ये mention किया तो उसने भी ये mention किया था कि but they just because he lacks the context switching part, that is why he hates that. Please don't be with me, because I remember I've read that book. As I said, a new Bible has been added to our
book list. It is हॉल ऑफ now फेम। Steve Jobs Hall of Fame. It is Steve Jobs and Elon Musk, both by Walter Isaacson. उसमें ना इलॉन मस्क एक बात बोलता है कि when I was with some, I don't remember who this was it Talula or I don't know. uh, so he mentions कि I in a 24-hour day, just because I sleep six half 6.5 6 hours 6.5 hours, so I'll give a 9 hour window to myself to meet someone, to date someone, to go out there and have dinner with someone, and that is it. So now you know that I'm context switching, which is very difficult for me in the line of work that I am. So if I'm giving that 9 hours, उसमें अगर कुछ होता है तो it's good. नहीं होता है तो that is the choice that I made. So and this is the choice that I'm making. I'm giving you my 9 hours. तो अगर उसके अंदर वो चीज़ ठीक हो जाती है तो that is good. वरना like what's the point? And if you really want to understand it better, मतलब मैं अपना एग्जांपल क्या दूं, मैं तो अभी उस लेवल पे भी नहीं हूँ जिस इंटेंसिटी से इलॉन मस्क काम कर रहा है, बट someday there's a very good story in Elon Musk about Elon Musk and Grimes की या। relationship and bonding, right? I love Grimes. So why do I love Grimes? Because I have met a rare breed of people who are artists as well as intellectual. I've never met people who uh, play both the cards in their hands. If you're an artist, they're very obsessed about the art and they forget the intellectualization of that particular topic, what they're doing, why they're doing it. They just are in the flow, so they forget to ask the fundamental questions. या। Grimes is someone that I have really been fascinated with. Matlab, really, really fascinated by. She is, I don't know, like, अब आइडेंटिटी क्राइसिस होगा तो मेरे को मत बोलना, लाइक वो लड़की मेरे को इतनी मस्त लगती है. शी इज अ म्यूजिक आर्टिस्ट. शी मेक्स टेक्नो म्यूजिक एंड शी गेव मी अ टर्म दैट आई यूज अ लॉट. So on Lex Fridman, I watched and I got to know about her on Lex Fridman ka podcast, and watch it. It is one of the beautiful journey of how intellectual sparring partners can be, which Aryan and I do a lot. उसमें वो एक चीज बोलती है कि आई थिंक हम, मतलब एक इवोल्यूशन साइकिल होती है ना, फ्रॉम फ्रॉम लाइक द स्मॉल ऑर्गेनिज्म वी बिकेम मंकीज, मंकीज से लाइक अर्ली ह्यूमंस, मिडिवल पीरियड आया, फिर हम मॉडर्न ह्यूमन बन गए. अब मॉडर्न ह्यूमन की बात क्या, एंड दैट इज व्हाट आई सीक इन द वर्ल्ड इन माय होल लाइफ, कि मुझे वो ह्यूमैनिटी के आगे हमेशा डालना था. कि देयर इज अ मॉडर्न मैन, व्हाट आफ्टर दैट मॉडर्न मैन, इज देयर एनीथिंग? एंड लेक्स फ्रेडमैन के कॉन्वर्सेशन में विद ग्राइम्स मेंशंस कि मुझे लगता है कि अभी हम जो इस एरा में पैदा हो रहे हैं, दे आर नॉट होमोसेपियंस, दे आर होमोटेक्नो, बिकॉज वी हैव बीन सराउंडेड बाय दिस ultimate uh, ultimate realm of technology. We have been imbibed by it. Slowly and gradually, the technology that we see in front of us will be in us in the coming future. So we are basically homo techno because now we have started tinkering with our own origin, which is the DNA, and that is where we have dusted off the first layer of होमो टेक्नो. तो ये वर्ड मुझे ग्राइम्स ने दिया है. आई यूज इट अ लॉट. आगे जाके whoever comes in my contact with having an offspring on a prodigy, I'll mention them कि this is not a homo sapien that is in your hand, this is the homo techno. And आपको भी करना चाहिए, because this would be the last generation, our generation who were homo sapiens. इसके बाद जितने भी लोग आएंगे, आप ये जेन जी जेन एक्स वाले लिंग्विस्टिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है. होमो टेक्नो. और तेरे तो को ये वर्ड इसलिए भी पसंद है बिकॉज होमो। तो भाई ये उसमें से भी मैं जोक्स। संधि विच्छेद करना चाहता हूँ. हो मो. होमो। एनीवेज. तो तो बहुत अच्छा कॉन्क्रीट आंसर दिया। जो जिग्नेश विग्नेश जिसने भी क्वेश्चन पूछा था वो ऐसी कुछ नाम था यार उसका उसका आई थिंक हैंडल का नाम ही जिग्नेश विग्नेश ऐसा कुछ है। बट गुड. थैंक यू फॉर आस्किंग। आप फिर से हिम्मत नहीं करना पूछने, नहीं मतलब आप पूछते रहना हमसे जो आपको क्वेश्चन पूछना है, हम तू बड़े बता ना, देख। ये चीज मैं तेरे से पूछता हूँ. तू तो नहीं बोलता कि यू वर्क एट एवरी वेकिंग आवर, बट व्हाट इज योर बैलेंसिंग एक्ट ऑफ लाइफ?
मैं नहीं बोलता है वर्क इट एवरी वेकिंग आवर, बट अच्छा उससे पता है क्या होता है? मेरे को ना, आई आई एम वेरी प्रोडक्टिव बट आई डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम। आई आई डोंट नो माई एनर्जी साइकिल्स। लाइक लोग बोलते हैं ना, आई एम वेरी सेल्फ अवेयर, आई नो मैं इस टाइम पे ये कर सकता हूँ, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता। मेरे को जैसा मीटिंग का शेड्यूल होगा ना, आई जस्ट सरेंडर। तो मैं अपने कैलेंडर पे सरेंडर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे कैलेंडर खुला रहता है कंपनी में। कोई भी किसी को भी कुछ भी ऐड करने कर लो। वैसे नहीं करते, हमारी कंपनी बहुत ही वीक है कैलेंडर यूजेज में, लेकिन कॉल कर देते हैं उसी टाइम पे। जो भी है, कॉल कर दिया, मैं काम कर लिया उस टाइम पे, लिटरली ऐसे संभालता हूँ चीज को। वट एवर कम्स नेक्स्ट आई जस्ट डू इट। तो दैट इज हाउ आई वर्क। आई डोंट शेड्यूल थिंग्स बहुत ज्यादा। तो बिकॉज आई डोंट शेड्यूल, इट डजेंट, it is not well balanced or well managed, probably. Time is not well managed. Work is getting done, productive हूँ, but it is not well balanced. तो वहाँ पे क्या होता है कि I do lose out on time here and there. I mix up things. I am not very organized. I'm very clumsy in my time, which I think will come with age, probably. I don't necessarily think कि मेरे को सारी चीज़ें at 24 ही जाननी है या करनी है। तो probably आ जाएगा। अभी तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, सारे रिलेशनशिप्स में ही कोई ना कोई परेशान है मुझसे। तो इट्स जस्ट दैट कि यार नहीं है टाइम, मैं क्या करूँ। तो हम और मे बी तो इस चीज को ऐसे पुट कर सकते हैं कि कोई है नहीं अभी वो चीज समझने के लिए कि नहीं है टाइम। हम्म, I mean, a lot of people just repel with you, not you, just generally, या with folks like who are very intensive about their work because they're not ready to accept and understand what is happening with you. They're like, oh, मेरे को मना कर दिया बस बस ठीक है ठीक है. या एग्जैक्टली। That- और माय फैमिली इज ओके विद इट। Obviously you have to give time, and I won't call it give time. It like feels like giving something out, like you deserve this or something. I actually like it, but I like spending time with my family, तो वो है। उसके अलावा मतलब उतना ही टाइम मिल सकता है, उसके अलावा और जैसे आई सी अराउंड, आई सी पीपल बीइंग इन रिलेशनशिप्स, बीइंग like having romantic things with people. Honestly, I see that around, and I'm थोड़ा सा taken aback at the, मतलब how do you get time to do all that? How do you make, I don't even have time to keep up with what my friends are doing. तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे को नहीं समझ आता कि मैं कैसे करूँ। तो इट स्ट्रेन्स रिलेशनशिप्स, इट डज हैव इफेक्ट, आई हैव सीन इट with my friends. And honestly, like those who are able to manage their time and everything and relationships are actually doing very well. Congratulations to them and you. I'm not able to. मेरे से I'm a little bored in this कि whatever there is in front of me, if I'm not doing that and I'm spending time, कभी कभी wasting time with people I don't want to be with, probably. So I think it also comes naturally. You actually want to be with the people that you, तो अपना भी टाइम बन जाता है, probably. Even if like uh, okay, you like someone, you be with someone, and I never found that those kind of people. तो तभी मेरा मन भी नहीं करता, मेरा काम ही करने का मन करता है। Probably I read a right, right. book, I'll listen to Audible, or I'll talk to you. Hmm? तो सॉरी सॉरी, अंदर Wait, का wait. सैम ऑल्टमैन जाग गया। भाई हमारे को ये ऑल्टिज्म से बच के रहने का है. राइट. ऑल्टिज्म। ऑल्टिज्म. बट हाँ तू देख, पिछले 6-7 महीने में हमारी कितनी बात हुई है। सिर्फ हमारी हुई है. सिर्फ हमारी। बट बट मैं कह रहा हूँ कितनी कम बात हुई है। हाँ, राइट राइट राइट. तो वही है कि तू भी बिजी था, मैं भी बिजी था, चीजें चल रही थी तो। और मैंने ऑनेस्टली किसी और से बात करी भी नहीं ज्यादा। तो इट्स जस्ट ऐसे ही चलता है। एंड आई डोंट थिंक नेसेसरली मैनेज करने की जरूरत है, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा जब जो टाइम पे जो आएगा। मेरी मॉम ये कहती है, जिस टाइम पे वो चीज मेंट टू बी है ना, वो अपने आप ही होती रहेगी। यू डोंट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि जब आपको मन करेगा ना, वो अपना भी एफर्ट आ जाएगा। तो दिस इज दैट।
एंड तो ये जिग्नेश विग्नेश जो भी था वो बंदा, उसके लिए एडवाइस है कि भाई चिल कर। अगर नहीं, इफ यू आर नॉट एबल टू अच्छा। टेक आउट टाइम ना, इट मीन्स नॉट meant टू बी, कट हर ऑफ। ये बेचारे को दुनिया में एक गर्ल लड़की मिली होगी, वो भी उससे भी ब्रेकअप करवा दिया। नहीं नहीं, आप हम यहाँ एंड्रयू टेट जैसा नहीं करना चाहते। वो एपिसोड आप देख सकते हो, हमने लाइक अपने चैनल हाँ पे डाला हुआ है। बट ये जो तूने अभी बोला ना, तो मुझे एक दो चीज मैं रखना चाहूंगा कि पहली बात तो ये हम्म, कि एक हमने एक हमारा एक्वेंटिस है, मेरा नहीं तेरा एक्वेंटिस है, जिसने तेरा एक है शॉर्ट्स तेरा, मैं डाली। नहीं। नहीं, जिस वो तेरा एक्वेंटिस है जिसने एक तेरा है भाई। शॉर्ट्स डाली और वो एक कहानी बता रहा था कि आई वेंट टू ऐसे, एक तो वो ऐसे बात करता है, आई वेंट टू द बीच विथ अ गर्ल एंड एक सेकंड, एंड किसकी बात कर रहा है तू? आई वेंट टू अ बीच विथ अ गर्ल। तूने ही मुझे वीडियो भेजा भाई उसका। है? हाँ अच्छा पूरा तो बोल, हाँ। कॉन्टेक्स्ट तो आई मिले। वेंट टू अ बीच विथ अ गर्ल, आई सॉ द बीच एंड आई थॉट कि आई एम वेस्टिंग टाइम। So I looked at that girl and I looked at the sea and I thought I'm wasting time. So I'm like, I want to build. And I'm like, what? पूरा प्लॉट ये था कि वो किसी बंदी के साथ बाहर गया और वो बीच पे था, उस बंदी के साथ बातें बातें कर रही थी, मतलब डेट पे ही थे। और फिर अचानक से उसे हिट हुआ रियलिटी का कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, हे प्रभु, हरि कृष्ण जगन्नाथन हो गया उसके साथ। एंड एक तो मुझको बना। ये लोग बड़े बेकार लगते हैं जो ये सोचते हैं कि नो, रिलेशनशिप्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड उससे पहले मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, मैं उससे पहले ये कर। अरे ऐसे नहीं होता है, हर चीज को प्लान करके चलते हैं ना लाइफ में, कि पहले ये इतना है, 2 करोड़ नेटवर्थ, अब इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर मैं वो फाइनेंस विद शरण का फायर वाला जो फिगर होता है वो बना लूंगा, उसके बाद शादी, तो उसके बाद बच्चे, अभी इतना प्लान करके चलता है लाइफ को। तो मुझे वो याद आई जब तू ये बोल रहा था ना कि मैं लाइक नहीं कर पाता, मतलब दिस इज हाउ आई एम एंड ऑल। तो मुझे याद आई कि भाई ऐसे भी प्रकार के लोग होते हैं जो हाँ, जस्ट बिकॉज दे वांट अ स्टोरी सेलेबल टू देयर पीपल, दे विल गो एट एनी लेंथ, मतलब देयर वाज नो पॉइंट। पहली बात तो you're sounding fool, the person you're watching this, I'll meet you someday and I'll like really we'll get him grill on you. a podcast and we'll tell him about this. I he that will become a AIB knockout जैसा episode rather than a podcast बन जाए। कि and uh, when I see these kind of people na, I weep for them, I pity them because they don't understand the fact कि जो चीज वो illusion में आके बोल रहे हैं कि I saw this and मेरे the fundamental chain of life भाई मेरे starts को नाम by बोलने का मन कर रहा है। शर्मा मत तू, ये नाम बोलने हाँ के मैं लिए शर्मा नहीं रहा। शर्मा मत। हाँ बोल और बोल। ईसान कर मुझ पे तू। एनीवेज, हम नाम नहीं हम्म, ले सकते क्योंकि अभी हमारे पास काफी अच्छा एक्वेंटेंस है हमारा, मेरा। हाँ तेरा है भाई, नीचे से दो। एनीवेज, तेरे द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि फॉर मी व्हाई एम आई सो inclined towards having all these aspects, all these uh, forms in my life, a romantic form, a family form, a form with myself, because I know what I have, like what is the essence of not having them around. At an early age, I realized what is the void that these kind of things create in your life. And just because I understand the essence of their unavailability is the reason why I treasure it more. I'm an old school. So that is also what stems from, balancing your whole feelings, emotions, support, etc., etc. Whatever and however you I'm want to call I'm it. an old school too. Probably that is why I'm not dating anyone. Good, good. Is that an invitation that a It's startup like guy? नहीं नहीं भाई, कोई डीएम, पहले तो यार देख, करो करो। when you have uh like a certain amount of followers, a certain amount of reach, you do get DMs, and
you get do get attention, but if you start responding to that attention, तो वो तो तुम फिर तो वही बन रहे हो ना, वही बीच बीच वाले, राइट, यू आर अ बीच लवर। बीच का बीच लवर बीच। हाँ। ओके, तो तो when when you do when you get into that, तो आपको basically you're not craving for a relationship, you're basically craving for attention. So I don't crave that. I'm not very fond of कि follower increase से, for me follower increase is basically revenue increase. मैं कोई और नजरिए से नहीं देखता उस चीज को, very capitalistic about it. And follower increases, revenue increase plus the kind of people that I collect in my community, that is it. But a lot of people don't see it that way. They see it कि कद बढ़ रहा है सोसाइटी में, वो सब फालतू चीजें। तो and it also comes to this, that your options in life increase. You have a lot of options, but you don't want them. मैंने तेरे डीएम्स पढ़े हुए हैं, हमने कुछ ऐसी जी मीट्स करी है जिसमें हम देखे हैं, तेरे डीएम सुने हैं, उनमें क्या बातें हुई है। यू डोंट वांट ऑल दैट, यू डोंट वांट ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। तो इट्स जस्ट, आई डोंट नो, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल। आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन, आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ अटेंशन। एंड And to all those old school that are listening to this right now, uh, you might have a very different storyline, but पता है जैसे तू बोलता है ना क्रेविंग वाली चीज, यहीं पे मैं थोड़ा इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि अब आप किसी चीज को एज अ क्रेविंग देखोगे ना, तो क्रेविंग के साथ there's a catch. क्रेविंग comes and it ends. तो इफ यू आर, कम्स ट्रू। एक फैमिली पॉडकास्ट करने वाला था ये, बट एनीवेज, मैं साइंस की तरफ से हूँ, इसका पता नहीं। हाँ। तो there's a thing, so let's relate this with जो प्यार के बारे में हम फंडामेंटली बात करें, राइट? तो when we talk हम्म। about love, when we talk about प्यार, तो what kind of love that you're seeking is very important. If you're seeking a love that you crave, then there's a catch that it will end someday. It might end the next day. It might end in the next few months, in the next few years, in decades, 2 decades, 50 years, but it will end. There's another antidote to this craving wala thing, which is being unconditional about love. So you're not thinking about love, but you're thinking the unconditionality that brings within that love. For example, माँ का प्यार बहुत मेंशन करते हैं, राइट? माँ का प्यार जो होता है अनकंडीशनल होता है। कभी रियलाइज नहीं करते कि हमें उस प्यार की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि वो जब तक होता है तब तक हमें पता नहीं चलता, एंड as soon as it leaves, it hits you. That void is being created in you. You know why? Because until the time you had that mother love with you, which is the exact and the purest form of love, and this is the same for fathers as well. मतलब मैं माँ का प्यार as a placeholder बोल रहा हूँ. The love that is very unconditional is the truest form of love because it doesn't seek, expect, or it doesn't reward, it doesn't regenerate, it doesn't end, it doesn't erode as well. It just stays. You're born with it and then you like end with it. Same for your family, same for your. So if you can find someone who disposes this kind of unconditional love, na, stay there. Cravings क्या करती है ना, cravings acts as a crest and a trough. It is like a it's like a wave. Wave बढ़ती है, there's a Gaussian curve, a bell curve, and then it drops down. It's something like what happened with Clubhouse ka user base, right? People came हाउस with पार्टी। such a hurry. House party. People came with such a hurry, and then it all dropped down. In the same इस चीज को way, लव बॉम्बिंग बोलते हैं आज जेंजी अच्छा, लिंगो में। या लव बॉम्बिंग तुम्हारी बेसिकली व्हेन यू लव बॉम्बिंग किसने बनाया ये? है ये बेसिकली सही आप में लव को लिंग्विस्टिक? बॉम्ब कर देते हो एक जगह पे जाके, और फिर छोड़ के चले जाते हो। इसको बाय काट, बाय। अच्छा, एनीवेज। काट नहीं कहते यार। the बट तो ये क्रेविंग्स वाली चीज तो बोल रहा था ना, लाइक there's no point craving it because
खाने की या क्रेविंग आती है तो खाना खा लेते हैं, क्रेविंग खत्म हो जाती है। यू हैव टू लाइक थिंक इन दैट वे। या Love is not like that. So any that Jignesh, Suresh, whoever that guy was, जिग्नेस विग्नेस। um, आपको बस ये पता होना चाहिए, when you are working, है ना, तो if you have displayed every aspect of your life in front of those people that are going to stay with you, they will understand. And if they don't, then you're with the wrong person. Like accept that. एंड एंड probably, and I don't say this from experience, by the way. I'm extreme. I would be the last person to take advice on this, but ये मैं बोल सकता हूँ, it will be easy probably. Yep. It will be Yep. something like you have with your parents, but in a very different way. But obviously, but it will be easy. It would be accommodating. And जब तक वो नहीं मिलता तो भाई, नहीं नहीं, there's not even easy. a The correct word which with your idea is simple. There's simple, nothing yeah. easy. It's simple. It doesn't come easy, yeah. 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 Easy का मतलब ये नहीं है कि easy is like it's not Easy is mentally boring. taxing. हाँ, एग्जैक्टली, It's not राइट gonna राइट be राइट राइट mentally राइट। taxing. मतलब And if I don't know if this happens in your home, it might, that you're with your parents in a single room Mhm. and you're doing your stuff, your parents are doing your stuff, no one is talking, but still it feels warm, it feels connected, it feels like right. true enigma within the room, right? Yeah. A It's lot called of, comfortable silences. yeah, that is what I'm coming to. A lot of people need to do this silence syndrome slash test in their life, where you be with a person, be it your parent, be it your extended family, be it your romantic partner, and try to stay like try to stay just calm and silent with them. I'm not. I'm very energetic around everybody, but at times I practice this. I try to just silence my everything and then test the time that you spend in that silence. If that silence makes things uncomfortable, then you are at a really, really dangerous place. And why do I say this? Next episode. But yeah, Okay. that's the community thing that we did. OMT Oh, community का क्वेश्चन था ये, OMT है ना? community. Genius, Vignesh, you're not allowed in our OMT community. एक्सक्लूसिव। ये Yeah. प्यार व्यार की बातें, ये आईएएस सब आईएएस नहीं बनो, चलेगा भाई, क्या बकवास साइड पे देश कर को दिया हमने। संभालो, इतने 12th बढ़िया फेल। टॉपिक्स थे हमारे पास। हाँ, बट एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड। करें उसको या अगले एपिसोड में करें या अभी कर लेते हैं? अभी कर लेते। चल ठीक है। अब जिग्नेश तेरी वजह से हमारा स्लॉट गया है, पता, देखो तेरी, पैसे दे, हाँ। फंड कर हमें। वो 7 लोगों में से है, वो 6 हो जाएंगे ओ, जो देख रहे हैं स्पॉट। वेरी गुड जिग्नेश, वेरी गुड। तो अगला है कि हाउ हाउ डू यू पिक अप गर्ल्स? हाउ डू व्हाट? यू, तो मतलब कुछ पक्का लोग। वन मोर थिंग ये हम हम ये क्या कर रहे हैं? बट अब तो देखना, अभी तूने रिलेशनशिप्स वगैरह की बात की। आधे 90% हमारे जो वॉचर्स व्यूअर्स है, व्यूअर्स आप लोग, मैं विवान जैसे बात करता हूँ, चलो ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। व्यूअर्स आप लोग 90 से ज्यादा % तुम लोग सिंगल हो। ठीक है, तुम्हें कुछ करना तो आता नहीं है। तो अब इनके लिए विवान एडवाइस देगा, हाउ डू यू पिक अप गर्ल्स। विवान एडवाइस देगा। This is going to be fascinating. Two startup guys are talking about how to pick up girls. गो टू बाली, विवान प्रोबेबली। कट कट। कट कर दे। But let's see, ये ऐसे बहुत बोल ही रहे हैं बाली के नाम पे। नहीं नहीं, नो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे So, हो, बट गुड क्या फन क्वेश्चन ये। पॉडकास्ट बन गया यार ये। हाउ टू पिक अप गर्ल्स। और ये सबसे ज्यादा व्यूज वाला पॉडकास्ट बन गया ना, तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। भाई भाई, हम यहाँ काम धंधा छोड़ के लड़की कैसे उठाए, पटाएं पटाएं, पता। कैसे बात कर रहे हैं। लड़की, ओ भाई नोएडा वाला नहीं होना था यहाँ पे। हाँ, अबे बता। मेरा रूल, अब देख, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हम मेन स्ट्रीम से अलग जाते हैं, राइट? हम वो एंड्रू टेट वाली फ्लरिशिंग लाइफस्टाइल बात नहीं करते।
हम बहुत एकदम नीचे जाके एकदम वो मिडिल क्लास बीच फेटिश पे वाली भी जाएंगे बात नहीं हम। कर रहे हैं हम। बीच लवर्स जैसा हम बीच बात करते हैं, हम बीच बीचेस। का बात करते हैं, बीचेस का बात करते हैं। हाँ। आई बाय नेचर आई एम अ nihilistic person, right? So I don't try to give meaning to unnecessary things. जैसे I love the gesture part of the whole act, but I don't love the unnecessary fluff of ki uh, presenting this in a certain way, trying to like put it into words, trying to make it something bigger than life. There's no point if it is जैसे तेरी मम्मी ने कहा, जैसे मैं भी कहता हूँ, समय के पहले और समय के बाद अगर चीजें हो तो वो गलती होंगी। तो if it is meant to be, it will be, right? Now the question comes for all those folks जिनको ना उतना एलिटिज्म में जाना है, ना पूरा एकदम स्टूप लो के करना है, जो मिडिल में है, द मिडिल मैन। उन मिडिल मैन के लिए ना दो तीन चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन ऑन द गर्ल्स पार्ट। उसके पहले मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कुछ, बिफोर वी डिस्कस हाउ टू पिक अप गर्ल्स। मैं उससे लाइक हाउ टू पिक अप नहीं नहीं गर्ल्स के बता। पहले मैं व्हाट इज योर फंडामेंटल थिंकिंग? नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज अ स्टार्टअप। मेल। अबे तेरी सुन सुन क्वेश्चन सुन। I'm talking to you as a male component of the society. You know, what do you think when you think about having a partner, having a girl in your life, because you're not alt. So what do you, what is your clouded thoughts? वो बता। तब तो मतलब थोड़ा लाइक प्रेमाइज सेट करना पड़ेगा, ये समझ निकलेगी हाउ टू पिक अप गर्ल। वरना मैं थ्री स्टेप, हियर आर थ्री वेज हाउ टू पिक अप Anyways, अ go to गर्ल, beach, then get offended look, by the beach, then come come back back. and do a short video on it। 1 million तो views, all girls in DMs। ऑयल हाँ, बढ़िया। बताओ ना, what is your, as a male component of the society, what is your, मेल कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। हाँ हाँ, like I'm talking biology यार, साइंस हाँ की तरफ से हूँ हाँ। मैं। तो बता, what do you think about having a partner, romantic partner, girls in life, a girl in life? अच्छा लगता है। करके देखिए अच्छा। देखा नहीं लापरवाही बट का नतीजा। अब भाई साहब, अरे तो इट्स मोस्टली लाइक एक एक टाइम था जब थोड़ा पीयर प्रेशर में थोड़ा चला गया था मैं। देयर वाज अ टाइम लाइक दैट एंड आई वाज यंगर आई वाज यंगर। तो उस टाइम पे गलती हो गई थी, बट उसके बाद से आई आई हैव बीन वेरी इंटेंशनल अबाउट इट। इफ लाइक उसके बाद इंटेंशनल का मतलब यही हो गया कि मतलब कुछ किया ही नहीं फिर उसके बाद, बट मतलब इट्स लाइक अपनी चॉइस पे बेस्ड है वो बहुत ज्यादा कि इट इज सो डिफिकल्ट टू, एंड आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ और समथिंग इन दिस, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू रीच मी that, and I keep myself a bit exclusive in that sense. I have small groups, I don't talk to a lot of people, and I sure स्मॉलर ग्रुप्स बोल रहा था यार, small स्मॉलर I ग्रुप्स। have I मेरे circles पास में। भाई तू तू 2 मिनट यार। तो अगर अगर आप ज्यादा एक्सक्लूसिव रहते हो तो ऑब्वियसली आपके चांसेस कम हो जाते हैं, तो और अच्छे लोगों के सॉर्ट ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी लाइफ में। कि सो आई एम जस्ट इन दैट थिंग कि कोई होगा तो आएगा, आएगी, आएगी। मैं ऑल्ट मैन नहीं हूँ। एंड हाँ मतलब बहुत बहुत ज्यादा थॉट नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है चीज कि मेरे कुछ सिंपल एस्पेक्ट्स हैं जो भी मेरे लाइक मेरे मेरे मॉम डैड ने सिखाए हैं चीजें, which I know about relationships. I know how, and I've seen a lot of people being in bad relationships here around.
and I've seen my friends being in relationships. I've seen you being in a relationship. So all of that has is my database, and I know कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए. And I've seen you like you are a person who I kind of look up to कुछ चीजों में, and who I look down upon कुछ चीजों नहीं. मतलब भाई go ये down. अप डाउन अब नहीं नहीं, ये नहीं. ऑल्ट तो मैन नहीं बनना है अपने ऑल्ट को। मैन नहीं बनना है हमें. हाँ, ठीक है डोंट बी एन तो ऑल्ट मैन गाइस, डोंट बी एन ऑल्ट मैन एवर, ठीक है. सेव ह्यूमैनिटी। हाँ तू बोल रहा था। तो हाँ वही, ये अभी ये कैसे हो गया. तो वही वही, that's a simple thought that I have, that I want simplicity. I want something. Since we're talking about love, uh या I want simplicity, and I want uh, I don't want, I don't want it difficult. I want it easy. Easy का मतलब है कि shouldn't be exhausting, because टाइम ही नहीं है भाई. टाइम होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. तो एग्जॉस्टिंग हो तो बिल्कुल टाइम नहीं है. एंड आई पर्सनली, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर एज ग्रुप जेन जी, जो कि जज नहीं करते कि यार इट्स देयर चॉइस एंड ऑल. आई एम लाइक, ब्रो, if you're wasting all your time and energy and exhausting yourself in stupid stuff which has no meaning, और बोल रहे कि यार वी आर एक्सप्लोरिंग, अभी मैं एक्सप्लोरेशन फेज में, अभी मैं ये फेज में, अभी मैं इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे ना लाइफ का, कि जो और चीजें करनी है वो तो रह ही जाती है, और एक्चुअली उनको करनी नहीं होती है ऑब्वियसली. तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं है. मेरे को तो बहुत सारी चीजें करनी है, तो एंड जो करनी है वो रह जाएंगी अगर मैं इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाऊंगा. इन सब चीज़ों को मैं मतलब डिमोनाइज नहीं कर रहा हूँ कि कि डेट नहीं करना चाहिए, ये वो, बीचेस पे मत जाओ तुम, नहीं तो तुमने अभी तक 2 करोड़ 10 करोड़ पैसा नहीं कमाया है. ऐसे नहीं. इट्स मोर लाइक, फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है जस्ट कीप इट वेरी एक्सक्लूसिव. डोंट लेट पीपल इन योर लाइफ, एंड द ones who can still enter your life, they're meant to be. So यू नो it's like, इट्स अ वेरी गुड थॉट। अभी जो हम ये चीज कर रहे हैं इसको साइको एनालिसिस कहते हैं, है ना। जो हम हमारे कॉन्वर्सेशन मोस्टली अब वैसे ही हो गए, हम साइको एनालाइज कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे। एंड तू, तेरा जो मेथोडोलॉजी है इस चीज को डील करने का, बहुत फिल्ट्रेशन वाला मेथोडोलॉजी, राइट? यू लाइक हाँ. फिल्टर अ लॉट ऑफ थॉट्स, नॉइज, पीपल until you come to a conclusion, and that is a good way to move forward. बट यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज को ये नहीं समझते कि the filtration that you have comes from a lot of sample space and a lot of information that you have, and a lot of experience that you have garnered throughout the lifetime that you have, right, of 69 days. But जो middleman है, we're talking about the middleman here, a lot of choices that they make regarding romance or love or partners or particularly girls, it comes out of fear. And it is same for both the parties. This middleman is also a placeholder for people, girls, boys, and that's the only two people that we're targeting. So, 7 people. so basically, it stems from this act of fear. जो तू फोमो वाली चीज बोल रहा था ना, कि यू स्टार्टेड समथिंग आउट ऑफ फोमो, इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. यू नॉट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि जस्ट लाइक यू एवरीबडी एल्स, एंड उसका कोई टाइम लाइन नहीं होता डूड. लाइक लोग लेट थर्टीज में भी जाके वो आउट ऑफ फियर फोमो वाली चीज करते हैं. लाइक दे अप्रोच पीपल जस्ट बिकॉज दे फील दैट ओ शिट, there is a societal narrative upon me and I won't be able to match it. So now I need to go out there and search for partners, search for opening up, going out there. And culture, these culture that is rented, that is what stems. That component of fear is really devastating. How fearful ho, इसलिए a lot of times people don't let people in. In the end, they're called rude. A lot of times that fear
makes you very vulnerable, and people call you bol bachchan, like बहुत बोलता है. At times, that fear makes you so stubborn that you are not able to rationalize between someone with an intention of loving you and someone with an intention of hurting you. So you always choose the part which seems shiny. ये fear का component in this middleman group now is really, really devastating. Yeah, We need to understand that. And that is the first step of how yeah, yeah. to pick a girl. Right, Dehumanize your fear. Don't right. let it get on you. आप You know, डिसीजन ये मत लो कि हे जस्ट बिकॉज आई गॉट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप पुराना खराब हो इसलिए मैं आउट ऑफ फियर कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मैं जाके टिंडर बम्बल पे नहीं, हिंज पे बात कर फिर लेता हूँ अगले लोगों से. वाली की भी लाइफ बर्बाद करूँ, फिर उसके बाद अगली वाली की भी लाइफ बर्बाद. फॉर द फर्स्ट स्टेप, इफ यू हैव फियर एंड इफ यू गोइंग आउट पिकिंग अप गर्ल्स विच इज, अब ये इंग्लिश में बोल दिया तो थोड़ा डेरोगेटिव लग रहा है, एंड यू ऑल एंटी ह्यूबरमैन बोल इंटेलेक्चुअल्स. नहीं नहीं. दे. एंटी ह्यूबरमैन. एंड भाई ह्यूबरमैन, अभी उसको हम पता है एक एपिसोड में ह्यूबरमैन बाबा करके एक एपिसोड कर सकते हैं जहाँ पे विल टॉक एवरीथिंग अबाउट ह्यूबरमैन. व्हेन इज ही कमिंग टू दिस पॉडकास्ट? आई विल वी नीड टू हैव समथिंग टू गिव इन रिटर्न ना. उसको नहीं चाहिए होगा, वो बोलेगा मैं आ जाऊंगा. उसके स्पॉन्सर्स में से कुछ खरीद. वो बोलेगा तेरे उसके नीचे राम सिया राम सिया राम के नीचे आ जाऊंगा मैं, मेरे को बस डाल देना. तो फर्स्ट ये फियर वाली चीज ना, दिस दिस मेक्स a lot of difference when you think from fear, that fear component, and when you think beyond that fear component. So when we say you're picking up girls, for the woke mind virus who are watching this, picking up girls का मतलब है कि आप अपनी आपके अंदर जो एक्सप्रेशन है किसी भी नेक्स्ट पर्सन को देख के उसको आप एक्सप्रेस कैसे करो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग सबसे पहली गलती करते हैं फर्स्ट मूव में, कि वो जाते हैं उनको कोई लड़की पसंद आई या लड़का पसंद आया, कोई भी बंदा बंदी पसंद आई, दे गो आउट देयर एंड जस्ट लाइक हे हाय आई एम दिस 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 एंड आई लाइक यू XYZ. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि आप जब कोल्ड डीएम किसी को कर रहे हो तो until unless there is no context to why you are there and why you're talking to that person will either not reply to you, block you, feel very irritated from whatever you're trying to do, feel very annoyed that whatever you had, you just ruined it on the first go. The same psychology works for any person that you're approaching. Just don't barge that in. मतलब इट इज समथिंग लाइक आप मॉल में जाते हो और सबसे पहले सर क्रेडिट कार्ड थप्पड़ मार के भगाते हो ना उसको. तो इट इज इन द सेम फैशन. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ पिकिंग अप गर्ल्स डोंट विच ट्राई इज टू सेल योर सेल्फ. या just out of fear, don't try to sell yourself. Just be there for a while, analyze and inspect the room before you make the next move. The second step is what Aryan was talking about, the filtration वाला part. क्योंकि हम हमारा पता है हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो ये हमेशा डिक्टेट करता है कि हमें जो कंपोनेंट्स पसंद है ना, लाइक वट एवर वी लाइक वो हमारा एक पजल का पार्ट बन जाता है, एंड वट एवर वी आर सीकिंग वुड फिट इन दैट पजल. दैट इज नॉट हाउ यू बीइंग रोमांटिकली इन्वॉल्व विद समवन वर्क्स. आपका पजल पीस कभी वैसे फिट नहीं होगा. आप अगर ढूंढने जाओगे तो इट इज लाइक नीडल इन अ haystack. You can never find it. You will never be able to find a right match for the component puzzle that you have in your list. Rather than that, filtration करना चाहिए आपको. A sign of maturity कहते हैं कि filtration इस वे में करना चाहिए कि there are things that you like and there's an idealistic self that you have created in your brain which you want to propagate to the next person. So just don't try to make them fit in. Filter it. Like if you are with someone, if you're on a date, or if you are just talking to someone, try to filter out all those checklists that you have with what they share in your regards. You can like football, they can like cricket. The filtration should be कि you both like sports.
rather than going into the. There's a very good, matlab, there's a very good quote by Jeff Bezos, and it goes like, you should always be obsessed about the vision and be flexible about the detail. Be obsessed about the vision and be flexible about the details. And that is how love works. Just be obsessed about the uh, expression that you're putting in front of the people, but be flexible on the details. Filter out. That is the second step. And the and the final step would be confront. Don't pretend. Yeah. For example, just say, if I have to, like, don't take it in the alternative fashion. If there's something that I want to tell Aryan, which is making a particular scene ugly, तो I won't pretend that अरे मैं इसको बोलूंगा तो क्या होगा नहीं होगा क्या हो सकता नहीं हो सकता. A lot of, like, a monkey brain in us works in that way. We start visualizing all the possibilities that can happen. Don't. Confront. Confront. ये आप अपने कंडीशनिंग से सीख सकते हो. जब से बचपन से आप आए हो तो आपके माँ बाप ने आपको ना कन्फ्रंट किया है. उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया आपके सामने. इसलिए आप इतना ज्यादा निटेड फील करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. बिकॉज दे कन्फ्रंट. कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन है ये. दैट काइंड ऑफ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग यू माइट बी फीलिंग वेरी ऑफेंडेड बाय, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में कैसे, अबे उन्होंने ही तुम्हें लाइक इस दुनिया में लाया. दे कैन टेक योर गाइड लाइफ. किए। मतलब या। but that is how you should see it. Confront, don't pretend. And these are, thank you for coming to my TED Talk, 3 steps in picking up girls. Please just and I don't know, probably एक और जेंजी बीमारी है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जिसके अंदर everybody is thinking कि I have a lot of choices so I can just go with another guy, another girl, like why should I be with this person and all. And I see that I actually did a reel on it, that how Tinder and Bumble use paradox of choice as a tool to keep bringing you back. There's a very famous meme, that you could not live with your own failure. Where did that bring you back to me? So people just come back on Bumble. You might think that, okay, now I found the right one. Now I'm not going to Bumble again. Delete. Bahar mein gaya. Like, and then you come back to it because Bumble is that habit making forming machine which is very toxic in every way possible. तो उनका तो काम ही वही है. They want to do that to you. They want they want you to not be with someone, and you should think of better choices all the time. So paradox of choice is a very important concept when it comes to dating. You should not, like, being exclusive also means when a person is in your life, be with them. Don't don't go around. Try it. कुछ टाइम तो दो. लाइक लोग तो आजकल, दैट इज व्हाई आई, मेरे को ये थोड़ा वो मोदी जी वाला हुआ है, कैन डू जनरेशन है ये वाला सीन है कि द रीजन आई डोंट वांट टू लाइक डेट एनीवन राइट नाउ, प्रोबेबली, और हो सकता है कुछ टाइम में चेंज हो जाए, आई डोंट नो माई सेल्फ इतना, बट दिस इज अ वेरी मेजर रीजन बिकॉज people are not normal anymore. They are weird. I don't see them like किसी को. I'm figuring out my relationship goals. But what are you figuring out? मतलब it's the, and like लोग हर चीज को ट्रांजैक्शन बना दिया. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, लाइक हर चीज को अजीब एक, पता नहीं, इंसान को पता नहीं एक मेथडोलॉजी में डाल दिया I'll give जिस. you a better term for this. I love या. making या. terms. This is called normalization syndrome. या. Everything has to be normalized. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, ये जो ग्रीन फ्लैग. ब्लू पिल रेड पिल वाली जो हरकत है ना, ये दिस इज वेरी कंसर्निंग. दिस इज वेरी स्कैरी एट टाइम्स. क्योंकि you're not letting yourself flow in different directions. You're conserving everything under 2 or 3 options right in you, right? एग्जैक्टली. And
एट टाइम्स व्हेन यू से ना कि मतलब रिलेशनशिप गोल्स एंड ये एंड ऑल, ये जो एक ट्रोमैटिक रिस्पॉन्स है। एंड चलो ठीक है, बिफोर दिस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर इज अ शावर थॉट दैट आई हैड टुडे, and I have been thinking about it, which connects with this concept a lot. Self improvement as a gateway has made people, humans, so individualistic na ki हाँ, the scope of natural selection is what people are trying to control, which is not in their hand. राइट, राइट। This आई is सो एग्री really विद दिस। really problematic in today's world. मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों इतनी घटिया लगती है? व्हाई डू यू थिंक आई हेट HATE? देयर इज लॉट ऑफ stuff that I dislike, but there are very rare things that I hate. There are few people, there are few things. There's a book, Atomic Habits. I hate it. I hate it from my gut. Why? Because that particular book is making you romanticize the idea of self improvement in you by not making it actionable at all. It is just making you कि आप ऐसा कर सकते हो. I hate it. I hate it from the gut because self improvement leads to an individualistic approach to life, and it is just hindering, like, it is causing hindrance in your natural selection to express your emotions and feelings. आपके दिमाग में ये नैरेटिव लग रहा है कि आई एम बेटर, बी बेटर, डोंट बी सॉरी, बी बेटर, बट not at the cost of you fighting the natural selection in front of you. ये जो तूने बोला ना, रिलेशनशिप गोल्स हैं और ये हैं वो हैं, व्हाट्स द पॉइंट इंडिविजुअलिस्टिक ऑफ, बना रहे हैं चीज को। हाँ, दिस इंडिविजुअलिस्टिक रिफॉर्म जो आ गया ना अचानक से कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम गोइंग टू लाइक बीट इट डाउन ऑल बाय माई सेल्फ, ये जो, सो दिस इज मोर लाइक अ जैकेट वर्जन ऑफ मेडियोक्रिटी। आप या क्योंकि या कोई चीज फाइट नहीं कर सकते तो आप उसको इस नरेटिव में जैकेट कर देते हो। दैट इज रियली परफेक्ट हर्टफुल। बिंगो। दैट इज रियली हर्टफुल। कल्चरल कल्चरल हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी व्हाट इज दैट? ऑफ, मैं कितनी बार पॉडकास्ट में बता चुका हूँ तेरे फिर से बता दे हमारे को। नए यस। दर्शकों के लिए, लवर्स लवर्स नए अच्छा, वो जो दर्शक। 7 का 8 हो चुका है, ठीक है। 8 हो चुका है, यस। तो कल्चरलिज्म मीन्स, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी हम और जाएंगे, बहुत बहुत लंबा और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। एंड कल्चरलिज्म कुछ भी नहीं है। जो पावरफुल लोग होते हैं उनका, जो लेस पावरफुल लोग होते हैं उन पे एक कल्चरल ब्रेन को कंट्रोल करने का इम्पैक्ट, ताकि वो जो लेस पावरफुल लोग वो पावरफुल लोग पे रिवोल्ट ना कर पाए। गेट इट? सो इट्स लाइक, अगर हम अमेरिकन कल्चरल हेजेमनी बोलते हैं, तो अमेरिका ने जो जो हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, जो उसने सॉफ्ट पावर कमाई है, वो एक बहुत बड़ी कल्चरल हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स अमेरिकाज वे ऑफ लिविंग is seen as superior to our way of living, and you get consumed in that culture so much that you stop questioning that thing. Like, you just questioned it, you just revolted against it, you revolted against an individualistic way of living. In America, love or relationships are considered partnerships. That's why they call it partner, my partner, my partner. In India, पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं था कभी भी। इट वॉज मोर लाइक, कैसे बोलेंगे, इट वॉज मोर हायरार्कल rather than दो जिस्म एक जान टाइप। गेट इट? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन। बट तेरे ये आ जाता है अंगूठा। तो तो यू गेटिंग इट कि इंडिया में कॉन्सेप्ट वाज, वी आर टुगेदर, ओके, वी आर अ यूनिट। इन अमेरिका, नोबडी इज अ यूनिट। ये अलग है, वो अलग है, इनके जो बच्चे हैं वो अलग है। सब अपने अपने सेल्फ बन रहे हैं। सबकी अपनी चॉइसेस हैं लाइफ में। अब उस चॉइसेस से तुम्हारी जो कॉन्सिक्वेंसेस होगी, अब वो है एडल्टिंग। एडल्टिंग हर चीज उनके फ्रेमवर्क में बना हुआ है, तुम समझ रहे हो? एंड वेन एवर सम पीपल build stupid apps around adulting, I just, you know, the people, and I just
हेट दैट कॉन्सेप्ट कि भाई एडल्ट हो गए तो अब ऐसा होना है तो वैसा होना है। प्रोबेबली इन रोम डू एज रोमन्स, तो मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसी करता हूँ जो अमेरिकन हेजेमनी के अंडर आ जाती है प्रोबेबली। बट you try to refrain, you try to stop yourself from becoming a part of that culture, because it is not a nice culture. It is not for us, at least. I won't judge them probably. ये fact that I'm saying I won't judge them is also cultural hegemony. It's, why shouldn't I judge them? Like, just That's your just basic think over, human nature. Yeah, yeah, yeah. just think over your thoughts again and again and see where that influences, and think from the fundamentals. A lot of my friends are really offended by me when call out their hegemonic um, Attribute, impulses. Yeah, characteristics. yeah, and they don't like it. For Why would me, they? it's more like, uh, I don't want the person who is with me to think कि this person is a choice. You can go beyond this. It's a partnership. There's a transaction in that relationship. It's just stupid. That is just stupid thinking. Probably people will get offended over this कि ये होना चाहिए, ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, ये मेरे को क्या चाहिए? I relationship is probably giving. Love is giving. ओके, मेरे को क्या चाहिए, हर चीज वो पैरामाउंट में रखते हैं ना जो लोग। एंड आई एम सेइंग दिस एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन एक्सक्लूसिविटी, जो फर्स्ट फर्स्ट फिल्टर आउट करके अगले स्टेप पे जाऊंगा। तो दैट इज दैट इज हाउ आई थिंक अबाउट इट। इफ आई एम गोइंग टू दैट अगला स्टेप, देन probably that is my upbringing. This everything is about giving. You give, they give. You don't care about self itna. And because the other person is as giving as you, they'll care about yourself, you care about their self. That's how I've seen that in my family. That's how things should be, probably. That's what I want from my life, at least. तो मैं तो यही सोचा हुआ, दैट इज हाउ। तूने पूछा था ना फंडामेंटली हाउ यू डू यू थिंक अबाउट इट, तूने इंडिविजुअलिस्टिक बोल के मेरे को एकदम वो कर दिया कि हाँ, दिस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट वांट। इट्स नॉट अ पार्टनरशिप। दैट इज, इट्स जस्ट सिली टू थिंक ऑफ इट एज अ पार्टनरशिप कि तुम मेरे साथ हो, ये हो। ऐसा नहीं होता। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। Just have to be with the right person. And I just believe and I hope there are some people who are not influenced that much by Western culture. I'm just so happy that I met a long lost friend recently, and she told me a lot about her life, and I was so happy that, the things that are happening in a relationship are very Indian in nature. So I was Shadi. really happy about that. शादी शादी नहीं हो रही अभी उसकी, but it's it's more, it's very organic, it's very अच्छा, pure, it's very for a, for example, like विराट अनुष्का, अगर तुम ब्रॉडली किसी उस पे देखना चाहो, लाइक किससे आप रिलेट कर सकते हो, probably they are the best example that with everything in life, with everything going on, they have kept their relationship and their life very organic, and their life with their child also very organic. You'll hardly see Vamika with the daima. Only like, and you'll hardly ever see Virat not being with his family as soon as he leaves cricket. There's no individuality about it. Anushka giving time to Virat all the time, coming to the stadium, even though she's very busy with her own life. Like, there's no individuality about it. It's a very amicable relationship, and that is how things should be. you know, लोग तो our अपना our ही his extracting करते हुए है। the question बोल। that I asked, it stems from a very historical, cultural background of our Bharat. जैसे तूने कहा ना, we can label it as दो जिस्म एक जान, because that is how it has been. Like one true soul mate for life. That is what our culture teaches, right? Why do you think those relationship has been talked about in history and stuck for a really long time? Talk about great Hindu kings and their uh,
great love stories. That particular thing stayed, not in a, so if you go into the details, there's a lot of darkness in that story. What I'm talking about is the paradox of choices, the topic that you mentioned. uh, because if I the example that you gave on this, Virat and Anushka, so uh, before the baby part, the life story of both of them is so much resonating with my life. So uh, there's an interview where Virat is asked, आप पूजा पाठ करते हो एंड ऑल, तो ही सेज कि मैं दिखता हूँ क्या पूजा टाइप्स, पूजा पाठ टाइप्स. And then that video cuts to Anushka Sharma and Virat Kohli going into a mandir in हर dhoti हर kurta महादेव। and Har Har Mahadev. Yeah, yeah. That has Yeah. happened in my life. दिख रहा है तेरे थ्रेड से, पता लग रहा है वो। And it is so like ऑर्गेनिक। yeah, it has stemmed from somewhere. I love the concept of germinating within. There are a lot of stubborn principles that I have, and I still stick with it. But there's no point not having a new idea imbibed onto you and exploring what it is, how it is. या For me, that is the ultimate source of life without a राइट। meaning. Like you just be like water, my friend. Be like the vessel that you're put in. Which makes me talk ब्यूटीफुल। about the paradox of choices. Again, the component of fear comes in. The paradox of choices is such a fascinating concept that it it breeds the idea of fear in you, and the choices that you're about to make is stemming from the idea that if I don't make it, I'll regret it. And fuck, I need to do it. I need to make the choice. Varna, I'm going to get scared about what comes next. The uncertainty in love is what hurts our generation, and the reason why we have lost our Indian cultural identity and have moved on to something very individualistic. You need to understand, ये जो uh, we have really lost the essence of desiness in our love, which is very difficult to revive. So stakeholders of desi love, and what do I mean by desi love? A love which is separate from this fear component, separate from the rented westernized culture component, separated from different individualistic narratives and acting as one. वो कहते हैं ना कि एंड पार्टनरशिप भी नहीं है. आई एग्री, बिकॉज पार्टनरशिप में यू हैव टू गिव ओनली द 50-50% या of yourself. When you come into the इट्स सच अ बेसिक थॉट। लाइक तुम मुझे hmm, अपना एफर्ट दो, मैं तुम्हें एफर्ट दूंगी, ये ट्रांजैक्शन। एटीएम चल रहा है, एटीएम कर रहे हैं। ये होमोलोगस है, ये लोगों को समझना चाहिए. लाइक इट्स सो ऑल स्टूपिड। डीजेनरेट, इट्स लाइक कनेक्टेड. यूज माई फेवरेट वर्ड ऑफ द वीक, डिजेनरेट। Degenerate. Oh, we all are degenerates in some way or मेरे the other. दोस्तों ने काउंट रखी हुई है कि मैं मीडियोकर कितनी बार यूज करूंगा हफ्ते में, डिजेनरेट कितनी बार यूज करूंगा, और एक और वर्ड था। चल ना, अभी मैं तेरे को पैक इट 4 अप। वोकैबुलरी सिखा देता हूँ. क्या टेंशन. ये मैंने सिखाई तेरे को आज, हेजेमनी। गाइस Hegemony, लुक अप yeah. हेजेमनी एंड नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस इट I अगली have. क्लास में। What did I teach you? My shower thoughts. आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो. I शावर थॉट्स को रिवाइंड, भाई तू वीडियो को देखना thoughts. बंद कर ना अपना शावर में। Uh, this ये thoughts. दिस इज द बुक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। Paradox of choice. ये ले लेना लोग। इट्स ले बाय लेना बैरी लोग. श्वार्ट्ज। मैं अभी फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा हूँ। बट हाँ यार, इस मतलब दिस इज सो एक्यूरेट एंड दिस इज सो एप्ट, एंड आई थिंक वी शुड बिकम स्टेक होल्डर्स ऑफ प्रोपगेटिंग दिस थॉट that you can live life like this, because you don't have to live life like those people जो बेवकूफों जैसे जी रहे हैं, उनको पता भी नहीं कैसे जीना है। तो एंड इट इज ओके टू बी सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इट इज ओके इफ यू इट इज एक्चुअली ओके इफ यू वांट टू वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ पर्सन। रुको भाई, ढूंढो। जस्ट जस्ट डोंट डोंट गेट started with anyone, right?
एंड डोंट ब्रेक दिस योरसेल्फ। इज हिज दिल्ली सेल्फ टॉकिंग, ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ऑल्टमैन के टॉकिंग। साथ। बट पता है, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगेगी ये चीज। या। बहुत कंफ्यूजन है ये हम्म। सिंगल हुड को। सिंगलहुड। हाँ, सिंगल हुड को रोमांटिसाइज करके उसको इन्फ्लेट करने की कि भैया हम तो सिंगल है, जस्ट लाइक हम तो बाला, सिंगल है। हम पे तो हम पे तो यू है नो। ही नो। हम पे तो है ही नो। इस चीज पे ना, ये चीज मुझे लाइक बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देती है कि मी एज एन इंडिविजुअल पर्सन, आई एम अ पर्सन हु loves my solitude. I हम्म। love solitude. मतलब I need that space. That is my, call it my spiritual sacred space. Call it my abyss. तेरा Call it मी my टाइम। me मी time. टाइम। Me time. तो sol प्रोस्टिट्यूशनलाइज कर दिया मैंने तेरे सॉलिट्यूड को मी टाइम बोल फैमिली के। पॉडकास्ट है ये, जस्ट जस्ट जिंग। आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, इन सब शब्दों का मतलब ना ढूंढे तो अच्छा होगा। बट सॉलिट्यूड जो है ना, इतनी एडिक्टिव हो जाती है एक पॉइंट के बाद। अब मैं सिंगलहुड एंड सॉलिट्यूड के बारे में एक डिफरेंस बताता हूँ। हम सॉलिट्यूड में बहुत अच्छा फील करते हैं अनटिल अनलेस हमारे अंदर का केमिकल लोचा होता है ब्रेन में, एंड देन वी वांट, एंड देन वी क्रेव, देन वी क्रेव लव। Now, this हम्म। love can be compensated with a lot of things, but the narrative of society has been imposed on us in a way that love needs to be justified and satisfied with a romantic partner. Now, your solitude, you were enjoying a solitude. Achanak se that craving came in, and now you need a romantic partner. Now, what happens? The moment you start thinking from transitioning from a single entity, which was you in a space where you were enjoying your solitude, now you have to make a choice to make someone enter your solitude. That is where everything gets destroyed. That is where everything gets like crumbled to the ground. I'll tell you how. Because the more time you're single, the more time you're being proud about your singlehood, you're germinating the idea of solitude. And as soon as solitude hits you, so there's a difference. आपको single जब आप होगे ना, तो you're always hungry for unnecessary things. भाई चल, कोई लड़की से बात करा दे, भाई चल किसी लड़की को देख, मतलब देख लेते हैं इन द सेंस कि भाई चल कोई लड़की मिलवा दे, ऐसा करके, राइट? सो you're always wandering. Your singlehood mind is always seeking something. ढूंढा, बहुत हाथ पैर मारे, नाउ फ्रॉम सिंगलहुड यू ट्रांजिशन, बिकॉज जस्ट बिकॉज अब कोई मिल नहीं रहा, यू हैव नो चॉइस, so you embrace solitude, and this has happened with या। everybody. Anybody who tells me or like expresses themselves, boasts कि हमने तो solitude choose किया था. Solitude is not a choice, it's a transformation. You metamorph from singlehood to solitude. Just like आप एक chaotic person से meditation के थ्रू calmness के तरफ move करते हो, right? वैसे ही है, singlehood से you metamorph into solitude. Now that या। solitude makes you crave, क्योंकि you fought a lot, you didn't find anything, you moved into solitude. Now that craving came at a very weird time in your life. Now you want someone. Now ऑलराइट। when you go and seek someone, your solitude has taken over you. You are addicted to your solitude. And what will happen when राइट। addiction hits, and when you're uh, pulled back from that addiction? You'll withdraw from it. There will be a withdrawal symptom. मैं कमिट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ऐसे ऐसे वाली फीलिंग्स Right, right, होती right. है। या या। I'm just casually exploring. I'll just go with the flow. मैं गो बस, विद द फ्लो भाई। फ्लो we स्टेट have का वो जो not कॉन्सेप्ट labeled जिसने it. बनाया We ना। have not labeled it. We are platonic. हमने अभी तक सोचा नहीं प्लेटोनिक। है, हम तो बस फ्रेंड्स हैं, भाई वे जस्ट अबे। प्लेटोनिक दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है। प्लेटोनिक का मतलब क्या होता है? ठीक है। जो वर्ड ये बोल दे, प्लेटोनिक, खत्म। मैं आपको वहाँ। बता देता हूँ, जितने भी मिडल मैन है, प्लेटोनिक का मतलब ये होता है कि आपकी उत्तेजना तक
रिलेशनशिप ना पहुंचे, उसके पहले तक सब चीज प्लेटोनिक है। सिचुएशनशिप। बस ये सब जेंजी लिंग्विस्टिक मेरे साथ यूज मत करना, ये सब कुछ सिचुएशनशिप क्या होता भी होता नहीं है है। तू बता। कुछ भी नहीं होता, क्या है सिचुएशनशिप, क्या होता है? ये सब साले वो फैमिली पॉडकास्ट ही है, हम इस चीज ये को स्पेसेस में बीचेस, डिस्कस करेंगे। भाई कम से कम वो बंदा बीचेस वाला सिचुएशनशिप में नहीं पड़ा। रिस्पेक्ट फॉर हिम। कैसे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? सिचुएशनशिप में मिलना मर्द भी तो चाहिए होते चाहिए। हैं, मर्द चाहिए होते हैं। 100 रुपया देने की औकात। मर्द है। अरे 100 रुपया ही तो मांगता हूँ। एंड ये जो पूरा मैंने पाइपलाइन बताया ना, इसका सबसे एंड पार्ट होता है जहां पे आके आप रिट्रैक्ट कर लेते हो, और उस चीज को कहते हैं दैट रिट्रैक्ट। यू हैव बिकम अ prisoner ऑफ solitude. And when you become a prisoner of solitude, it is really difficult to continue any relationship. Any relationship. This will हैव यू बीन happen. देयर? I have been there. I have नहीं। been a prisoner of solitude for a really long time. बट And मैं एक चीज बताऊं, इट्स मच लाइक, इट्स मच ऑफ सॉलिट्यूड देन बी गिविंग टू एवरीवन इन टुडेज सिनेरियो। लाइक मैं, मेरे साथ लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। आई एम वेरी you're सॉलिट्यूड, not. You're not. solitude seeking person. I put myself above everyone, my time, my this। ऐसा नहीं है। That is not what I meant by exclusivity। Exclusivity का मतलब है कि I don't want my time, attention and peace to be hurt by someone else। That is it। ठीक है। तो मैं सिर्फ उतने ही लोगों को पहुंचाता हूँ अपनी लाइफ के पास तक जो मुझे पता है कि दे वोंट डू दैट। दैट इज इट। तो एंड सो सिंपल। एंड यूजुअली ये थोड़ा सा गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है। तो द गर्ल्स लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट, आई आई डोंट नेसेसरली थिंक गर्ल्स को जो मोटिवेशन दी जाती है, या गर्ल्स के जो, अगर तुम गर्ल्स के इंस्टाग्राम देखो, उनको जिस तरीके की रील बताई जाती है कि यार इस लड़के के लिए ये नहीं कर देना, वो कर देना। भाई जो आप नेचुरली हो ना, आप वैसे रहो। ठीक है। उसके अलावा, if you're very giving in nature, a lot of girls are very giving in nature, but over time what What happens is giving? they मतलब बहुत ही वो होती है कि दे वेरी दे देती हैं केयरिंग एंड केयर, दे वेरी, काइंडनेस। हाँ, बट दे गिव इट टू द रॉन्ग पर्सन। एंड वहां से इनका वो बैक ट्रैक होने लग जाता है अब ना, व्हेन दे विद अनदर पर्सन। तो अब उनको लगता है कि यार मैं दूँ या नहीं दूँ, मतलब केयर। So that is a very important aspect. I think what you are naturally, you just remain that. Let it be। अगर कभी कोई गलत हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर टाइम ही गलत होता रहेगा। Become exclusive, but be natural, be as organic as possible। If you're feeling it, just go along with it। Go with the flow नहीं बोला, go along with it बोला है। Go along with that feeling, not the rush। Don't go with the rush। If you're going with the rush, it basically means जो तूने बोला था, स्टार्ट क्लब हाउस बन जाओगे फिर वो। क्लब like the कि Gaussian curve of love. क्वेश्चन का या, Right, right, right. एंड and there are very weird dating things that are built around this world। Yep. I was talking to someone and she told me that you know wait, hello, Yep. यस, रुकावट के लिए खेद है। तो एडिटर भी नहीं है हमारे पास, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, बस ये कुछ, समझ लीजिए कि टेक्निकल कुछ ग्लिच हो गया। यस। तो व्हाट वाज आई सेइंग, मैं बता रहा था ना कि गॉसियन गर्ल्स कर्व का, ऑफ लव, गर्ल्स या का। गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू, दे okay, I was talking to someone recently and she told me that you know some guys approached her, like suppose you're in a party, okay, and some guy approaches you. So she was like, this guy wasn't interesting enough, this guy wasn't that enough, this guy, like when some guy is coming to you, it's, if it doesn't hit you, then why would you take that conversation forward? And I'm like, that is why you
people in your life because you are craving that hit. है, अब तू मुझे बता, कोई इंसान अच्छा इंसान होगा, वो इंसान कितनी बार सोचेगा इसके कि मैं इससे कोई पिकअप लाइन मारूं इस पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई सेल्फ लविंग, क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ, थोड़ा सा भी एक कॉन्फिडेंट नार्सिसिज्म का, बंदा यार, नॉर्मल। कॉन्फिडेंट बंदा, हाँ थोड़ा भी, हाँ यार मैं नार्सिसिज्म को कॉन्फिडेंस बोलने लग गया हूँ आजकल। शिट, टॉक्सिक ट्रेट, रेड फ्लैग हूँ मैं। रेड ओके फ्लैग है सो, तू। झंडा। झंडा गाड़। तो अबे। मैं ये बोल रहा था कि तो कॉन्फिडेंट बंदा अपने एबिलिटीज में, वो स्ट्रांग एंड माइंड से स्ट्रांग, कौन सा बंदा ऐसे करेगा कि यार मैं कोई पिकअप लाइन मारूंगा लड़की पे, या मेरे को ये चाहिए तो मैं उसके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी सही बंदा आपको मिलेगा ना, वो बड़ा ही नेचुरल रहना चाहेगा आपके साथ और नॉर्मल रहेगा। एंड मैंने अपनी रील में भी ये मेंशन किया था अबाउट पैराडॉक्स ऑफ चॉइस जो थी, कि देयर इज अ वेरी, विच आई कॉल्ड, आई डोंट नो इफ इट्स अ रियल टर्म, स्पार्की बायस। व्हेन you're attracted to that spark, you're attracted to that glitter, कि oh that guy was so attractive, like, बिकॉज इनको क्या होता है, गर्ल्स की साइड पे क्या होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गाइज हिट ऑन देम। ठीक है, एट अ ट्रू। पार्टी, आप में आप एक होगे, 10 और हिट कर रहे होंगे। सो एवरी गाय ट्राइज टू वन अप अनदर, एंड आई, एंड फ्रॉम द गाय साइड आई वुड से कि यू डोंट हैव टू, if यू if नो। if she's sane enough, if she's smart enough, she would know. And if she's not, बाद में गई, like, and from the girl's side, it's like, don't get attracted to फालतू की चीजें जो आजकल बना दी, कि मेरे को हिट नहीं मिला, अबे हिट, वो कोई वीड है वो, क्या क्या हिट देगा इंसान, वो कोई ऐसा पर्सन थोड़ी है कि लाइक ही इज नॉट अ, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही वांट्स टू अप्रोच यू, इफ that is why, that is basically why people attract the wrong kind of people in their life, probably. I don't know for sure, but I think that's why. तू बता इस पे कि, and this also comes back to how to pick up girls वाला topic. Don't try to, just be yourself. If you're at a party, just talk to people normally. I was at a party recently, like recently in Diwali ke time pe. There was a tash party. There were some unknown people, and I actually, like, as exclusive as I try to be, I allowed a lot of people in my life थोड़ा सा टाइम के लिए, कि ताकि I just wanted to explore a real party वाला scene after a very long time. And I spoke to people. I disliked them first of all, and थोड़ा बहुत hating and all हुई किसी की, and I was like, मेरे को वो अमेरिकन साइको वाला सीन, वो जो मीम है वो याद आ गया, ऐसे कान कान पे लगा के आगे बढ़ते। राइट बट राइट बट राइट। दैट इज ट्रू, एंड probably, I don't know why, but that's attractive to girls. So if you want to pick up it's a पिक अप अ reverse गर्ल, psychology. देन बिकम अ Just don't पार्ट be ऑफ, interested. नहीं, जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ मर्डर्स एंड मर्जर्स एंड Merger, एक्यूजेशंस। accusations. So बट दिस that इज is अ रियली, there, मतलब दिस अगर तुम्हें इज, अट्रैक्ट करनी ही है तो, अगर इफ यू नॉट शोइंग एनीथिंग एंड यू ट्रूली आर नॉट दैट पर्सन हु इज नीडी, कोई भी आ जाएगा, नहीं, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस ये देयर। शो एंड टेल में ना, सी दैट इज अ natural human instinct. Understand this from a different lens. ये हमारा नेचर, लाइक एक मर्द का नेचर ही होता है कि टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स वी हैव टू बिकम affluent in ourselves. मतलब we need to be attractive enough to attract that, and this was the normal, this was the natural selection. How does breeding happens? Because a male attracts a female and then they breed and then they uh, you know put on their legacy. अब मॉडर्न नरेटिव्स इस चीज को कैसे मोल्ड करता है, आप अगर अट्रैक्टिव हो, है ना, एंड अट्रैक्टिव इज सब्जेक्टिव, as said by a lot of people. You're such a shitty person if you think like that. Attractiveness is not subjective. There are only two components in attracting, being attracted to anything, right? um माय फेस एंड विवान्स वॉइस। yeah,
Yeah, I'll मैं tell you बता। what's the difference. I'll give you the attraction, how it works. If you're seeing a person as a soul, which is like energy, and हम्म, if that attracts you, you're one set of person. And if you're seeing a person and you see that person as a source, that is a different person. So try to understand. There's a soul and there's a source. The thing that you mentioned, कि hit नहीं मिल रही and लड़कियां, I dislike people a lot. A lot of people like it. I hate that gathering वाली चीज. I don't like parties. I don't go to parties. And क्योंकि मेरे दिमाग में वो कंफर्मिटी का जो डिस्प्ले है ना, वो आंखों के सामने ही है. आई हैव in a different version and my past life, I have been that guy who has been both the soul and the source. And the reason why I said ki I understand ki the essence when you don't have stuff, so you understand the value of things that is missing in your life. So I understood the soul and the source of any person or how you look at it. ये जो लड़कियां बोलती है ना कि मुझे हिट नहीं मिली, that guy was not attractive, XYZ and all, ये वही नैरेटिव्स हैं जो एक एक ग्रुप ऑफ पीपल को ना एकदम सप्रेस करते हैं, लाइक एकदम झुकाते हैं उस चीज में जहां पे आपको आपका स्टैंडर्ड लूज करके किसी और के स्टैंडर्ड पे प्ले करना. You're being influenced by some group of 50 people sitting in a room making 10,000 videos and making you feel that this is how you're supposed to feel, rather than actually looking inside of you and trying to understand. You didn't get a hit. You didn't find that particular person attractive because you were looking at the person as a source. I'll tell you how. You look at your teacher. Now, this is like a very different example. You look at it, you look at your teacher as a source. So anything that person is going to give you, you're going to take it in the exact same way that is yeah, supposed to be, right? You're not looking the person as a soul uh, in the person, right? So you won't find their way of teaching attractive. You want just the information. If the topic relates to your liking, that teacher is good. That topic is good. You got a hit. But if you're not looking at their soul, you can't understand that the way of teaching, their way of explaining, the art of what they have learned, that is really beautiful. Do you get the difference? इस चीज को और थोड़ा yeah, सिंप्लीफाई करते yeah, हैं. सोल एंड सोर्स को आप इस वे में देख सकते हो. एक तो वो जो लाइन है ना कि हम हम मर्द है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है. This is so true for a lot of situations कि बहुत सारी लड़कियां आपको इसीलिए रिजेक्ट कर देती हैं because they have plethora of choices to choose from, because whoever gives them that hit, that is their ideal partner. ये आइडियोलॉजी कितनी गलत है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट एनी पर्टिकुलर पर्सन. वो जिनको भी वे कर रहे हैं ना अपने स्केल पे, इट इज ऑल गोइंग टू एक्ट एज अ सोर्स टू देम. They're sourcing them. That girl needs what? A girl is lonely. They need someone to eradicate their loneliness. How can that be eradicated? By a person who just talks to them. They'll find someone who becomes their source of talking. That talking leads to something yeah. else. वो कंधे ढूंढ रही हैं आप, कंधा मत बनना। हाँ, राइट ठीक है, राइट राइट. लाइक आप दैट इज सो अपने शिटी। इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी और को अपना सोर्स बना रहे हो. अब यहीं पे इफ अ एग्जैक्टली। गर्ल लुक्स एट दैट सोल rather than द सोर्स, सोल बहुत सारी चीजें बता सकता है आपके बारे में एज एन इंडिविजुअल पर्सन. इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इनफ, व्हाट डज दैट मीन? योर सबकॉन्शियस वे ऑफ बीइंग, राइट? you're in a party, you're like being with yourself, you're not hampering anything, you're just with your thoughts right there trying to be in that situation. You're थॉट्स। just trying to be thoughts. um, and someone comes and someone falls in front of you, like this is falling not in your love but in front of you physically. uh, the next action that you're going to do is going to determine what your soul is. या आप या तो पिकअप करोगे जाके कि अरे गिर गया, ये you'll ignore, या you'll not notice, या you'll just say कि अरे ठीक है चलो उठ गया. मतलब whatever reaction you're going to give into that situation is going to display what kind of soul you have. So the subconscious way of being
यू जस्ट बीइंग इन अ सबकॉन्शियस वे, जहाँ पे आपको, जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल आप लाइक कोई चीज पढ़ रहे हो, स्वाइप हो रहा है, आप लाइक यू नॉट डूइंग दैट स्टफ with an intention to move it. It's just happening. Why? Because you're in the flow of reading. You're not controlling your hand कि बार बार जाओ और swipe next करो. Do you get it? That particular हम्म, subconscious uh, stuff happening, whatever action you do subconsciously in front of a person, towards a person, talks about their soul. So if a person is trying to figure out your soul, give them a chance. And that is like the finale of how to pick up girls. yeah. Look for the soul, not for the Look for source. the soul. This is like लिटरली रिलेशनशिप 101। Oh कितनी सारी चीजें shit. कवर कर दी हमने। और What did हम, we do? what did we do? What did we We do? became what we sought to destroy। बट एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें कि this is a very important part of life, and since we have a startup, our life revolves around work. 90% of it is work, but that 10% of our life, which My is thing revolves around love. So ठीक love है, makes me do everything. ठीक Love है, people. Don't let your population collapse. ढूंढ ले लिया। थ्री चिल्ड्रन, तीन बच्चे, 2.5, To 2.1, that is the metric na, that is how you like keep your population alive for for long, every couple, 2.1 is the number. Go for it. 2.1। 0.1 कैसे करते हैं भाई बच्चे, ये बता। ये YouTube हमें वो चीज डालने नहीं देगा। मैं एक ठीक है। अच्छे टेलीग्राम। वो जो हमारे सर्च करके आते हैं सोर्स से, प्ले आफ्टर हमारा वीडियो जो करते हैं वो वाले ओह, देख लेंगे। Japanese जापानीज। secrets to a healthy life. काइजन। But ikigai, इकी। wabi sabi, किनसुगी। kintsugi. भाई ये हम कोड वर्ड में बात करते हैं सर, कुछ ही लोगों को समझ आता होगा ना, वैसे इस पॉइंट अच्छी तक तो बात है कुछ ही ना। लोग आते होंगे। सेवन तो पीपल। 7 people। एंड ठीक है ना, हमें लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दिल फाइंड देयर ट्राइब someday. Look at I really feel fascinated. Look at Naval. He keeps posting stuff. The people who know him, they'll watch. Those who वे don't, वॉच। they don't watch. Nobody cares. Naval is doing his stuff. Everybody's doing else stuff. We're not propagating Naval's ideas. It's just कि आप यहाँ पे हो. If you enjoyed, that's really cool. If you या, didn't, like, there's no point. It's fine. You don't डोंट care. लीव अ फीडबैक, वी डोंट केयर। Yeah. Uh, and on that note, I think कितनी मस्त लगती है बात, डोंट लीव अ फीडबैक, वी डोंट केयर। now you know, like at the end of the episode, I think that's the end. Or is there anything else? I think there are a lot of things that we had to talk about, but we instead made this a career, relationships, how to pick up girl। by क्या कर दिया हमने ये, shit यार। What did we do? कोई बात नहीं, we'll But pick this up next time. It's fine. yeah, we'll pick up girls next time, ठीक है। Mm. क्या बोल रहा तू? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. I'm just saying कि we can bring some guests on our podcast the next time. Yeah। Is there अरे anyone who wants एक, to talk to us just like this, raw unfiltered, without any edits? We yeah, won't like, we talk anything and everything that you don't want to. So if you want us to bring you on our podcast, maybe there's one more thing just waiting for you. right, DM are in for that. DM Vivan। I don't reply to DMs। I don't have a DM. ऑफ कर दिया इसने, ऑफ कर दिया मैंने. क्योंकि इसको, ठीक ऑल्ट मैंस आते हैं मेरे सिर्फ डीएम्स में. है। सर, मुझे आपका चाहिए ज्ञान। सर आप यस। ज्ञान छोड़ दीजिए हमारे लिए. बट ठीक है, आई थिंक इट हैज, सो या, हम ज्यादा, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, लव अ लॉट. दे लाइक कि या, अच्छा कुछ टेक्निकल बता दो, कुछ एक्शनेबल बता दो, बट जो चीज हमें ह्यूमेन बनाती है वही चीज हटा दो. हाउ इज दैट ह्यूमन। ह्यूमेन? या. And this is the hint for the next podcast episode. Humane. Now you can figure it रैबिट out. वर्सेस ह्यूमन। Yeah.
तूने रैपिड होल देखा है वैसे? देखा देखा। आई वॉज हाँ। वॉचिंग इट लाइव। These are my things: engineering and animals. एनिमल। Anyways, on that note, I think this is the end of the episode. मतलब एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। हमने एंड विल। एक्चुअली शुरू हम किसी और चीज को करने वाले थे, बट जस्ट बिकॉज कि इसके इसके डाउट्स ही खत्म नहीं होते, और वो जो जिग्नेश उसको पकड़ गए। वो तो भाई गया अब। अब तो गया, अगर दिख भाई मत जाना, ये जहां दिख जाता है ना गुस्सा और आता है मेरे को। गुस्सा आ रहा था। तो बट वे इसके बाद हम कभी भी ये टॉपिक उठाएंगे नहीं। बहुत हो गया, खुद हमने पूरा हाँ। एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बना दी। इससे ज्यादा हमें हाँ, आता भी नहीं है इससे इसमें, ज्यादा और इससे आता ज्यादा भी नहीं है, है भी हम नहीं। इसको एकदम बात नहीं करेंगे अंटिल 14 फेब। इससे बट ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए वैसे। फोर्टीन हेट फेब को एटॉमिक तो हैबिट्स। 14 फेब को तो तू बजरंग दल, हम बजरंग दल जा रहे हैं। मैं ही हूँ। तू ये मैं ही हूँ। वी आर। 14 Feb को I'll write a thread on Bal Brahmachari. What does that mean? History surprises you. और चूहे खा के फिर भी So, अच्छे। but it has been a good 101 for people who are हम्म। in the middle, not the elite, not the below the lines. It's just Yeah. for the middleman. And also, again, hate atomic habits. Uh, eat, pray, love नहीं बोलूंगा because that is just a shitty idea that I've really like never ever I would like to have that concept Individualistic in life. concept. Huh, Yeah. like don't Don't be fall a for individualism at all. Nobody cares about you, and that's the best part. yeah, Like, that's the best part. How yeah, to pick up you're girls? nothing. Who? What is girls? What is a girl? Be alt Because man. be How to old pick up man. girls? Yeah. Uh, Pick the boys. big द Pick. पॉइंट इज कि अभी हम ये इतनी सारी चीजें बात की हमने, गर्ल्स ये वो एक्स वाई जी, देयर इज समवन हु इज गोइंग टू डीएम मी एंड इज गोइंग टू से यू mansplain a lot to them. I'd like to say सैम ऑल्टमैन की जय हो। You mansplain a lot. ये इस पे भी बात करेंगे कभी, controversial. We I mansplain a lot. What is mansplaining? वैसे मुझको भी नहीं पता, like a man explaining stuff, so that means your father mansplained your whole life। सर्च कर। सर्च करूंगा मैं। Mansplain I think मेरे लिए होता है when a man thinks of himself as above a woman and explains A man things has to to her. think that। ओ भाई साहब, मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने कुछ नहीं बोला है। मेरा क्लिप नहीं जाना चाहिए इसमें। मैं बस इसके साथ Yeah, बैठा yeah, हूँ। come to me. He will break you. I'll tell हम। you. I asked ChatGPT what is mansplaining, and it goes like mansplaining is a term used to describe a situation where a man explains something to someone, typically a woman. So who is there to explain apart from someone or a woman? Like that is the two sample spaces that they have in a ये manner that is बेसिकली, condescending or patronizing. या कॉन्डिसेंडिंग मतलब यू डोंट ये नो तेरे को दिस पता है, तेरे थिंग। को पता है, यही होता है। हाँ ये ऐसे होता ही है। होता है, कबीर हाँ सिंह। राइट, कबीर सिंह। तो ठीक है ना। एनिमल एनिमल में था अब जैसे। जब तुमको समझ नहीं आ रही तो if the tone is being raised, that is not patronizing you. It is just making the point a little bit more firm because you have 2 years and none is used. This often occurs in scenarios where the man wrongly assumes he has more knowledge about the topic than the person he is speaking to, ऑलवेज ऑल द टाइम। बट regardless of बट their actual expertise or familiarity with the subject. And what if बट they do? नॉट बट नॉट गोइंग विद द स्टेटमेंट, इट्स मोर लाइक imposing things on the other person. I The I think term that blends is kind man of and wrong. explaining and is used to highlight gender dynamics and perceived inequalities in communication, especially in context where women's knowledge or abilities are underestimated or undervalued. This particular, uh, the definition is trained on the ideas that float on the internet, and that is why I can understand how Yeah, how fragile people are. I it mean, is that. I Yeah. mean, if people doesn't have expertise on anything, and if they're just explaining it out of curiosity, that should be considered as a step to learn something rather than mansplaining. But I
आई थिंक But मैंसप्लेनिंग वर्ड ही उस टाइम पे यूज होता है मोस्टली, जब एक्चुअली कुछ कॉन्डेसेंडिंग वे से बोला जाए. इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन. how can a man condescend into anything until unless uh, the idea of oppression is loved in front of it? If you're trying to make a point, and सामने वाला is oppressed about their own या identity in some way, इनसिक्योरिटीज खुद की they'll ट्रिगर हो रही they'll है, राइट? the guarding of the shield up is labeling That's the stuff. point. That's the point. People don't work on their insecurities. They work on others. They want हाँ. others to change. They don't Yep. want themselves to change. Yep. So Yep. 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 they think that someone smarter than them is imposing thoughts on them, right? Instead of understanding that probably you don't know stuff. So, and that person can just put across a few points. So, and this is a very important aspect actually, हमने आज ही के एपिसोड में पिकअप कर लिया है. This is a very important aspect of modern dating. I've seen that happen a lot in relationships where the person, the guy, knows something about a particular subject more than the other person, and now he has to refrain from saying everything or stop the girl. Yeah, no, this is wrong, or no, this is, you don't know this. Let me do it. Types. Yeah. Yeah. Because that person is just, मतलब because that person is scared कि यार their partner would judge them कि यार तू कैसा हो रहा है, don't mansplain things to me, don't impose things on me, sort of like that. And that's Right. just Right. their Right. personal insecurities. Yeah, that is a major red flag for guys. Don't be with such girls, not at all. So wait, It's you know, uh, उस हिसाब से तो I should be the number one mansplainer of the world because I read about everything. I have knowledge about everything, so I'll give you expertise on everything. So that means that uh, तू mansplaining. mansplain नहीं करता. I have seen you. चुप रहे, It's more like मैं बताता it's more to explain करता है चीजों को. You want to give context and you want the other person to learn, and the other person who is with you also wants to take that in. हूँ. She is willing to be आई मीन that. Doesn't दैट mean इज द पर्क्स ऑफ मॉडल लव. हमने इतनी चीजों के बारे में बात किया. इन द एंड द होल शेल्टर ऑफ एवरीथिंग वाज मॉडर्न लव, एंड दैट इज व्हाट yeah. वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमें हमारे टाइटल में मॉडर्न लव लिखना पड़ेगा इसीलिए. हाँ, ताकि हम थोड़ा क्लिक बेट. व्यूज, वी डोंट केयर अबाउट नंबर्स, बट हम ये आइडिया पहुंचाएंगे कैसे लोगों को. हाउ डिड unless we एंड्रयू टेट tweak. बिकम अनलेट वी ट्वीक? या Yeah. देयर इज नो You पॉइंट want to be स्क्रीमिंग इन एन Andrew एम्प्टी रूम. Tate. You सो want to be Andrew Tate of India. Jail. who me? Romania. Who me? Yeah. I'd I'd rather be a no one in India rather than being Andrew Tate. Like, who's talking about it? No one. ये मेरे चैनल का नाम हो सकता है, मिस्टर नो No वन. one. नो Mr. वन. No one. Mr. No one. No one man's is plain. नो वन Uh, mansplains about anything. no one. और ना the man company sponsor कर, by powered by man company, co-powered by Beardo. जेल, जहां पे भी लगाएंगे वहां सुख पाएंगे. एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स. और thick beard. थिक Beard. बियर्ड. ठीक है. चल भाई, बहुत हो ऑन. गया. काम कर लेते थोड़ा जाके, बकवास करी चलिए इतनी देर से. थोड़ा, कुछ यस. दिन तो गुजारिए गुजरात में, कुछ बिल्ड करते हैं. ऐसे भी हम बिल्ड हो रहे, जा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी लेने गिफ्ट में. एंड ऑन दैट नोट आई शराबे पीने थिंक, जा रहा नहीं उसकी जरूरत नहीं मुझे. आई एम ऑलरेडी हाई ऑन लाइफ. लुक एट है. मी, डोंट लुक एट मी. ऑल्ट मैन कहीं के सब लोग. एंड आई थिंक वी आर डन फॉर दिस 10th एपिसोड. हमारा 10th episode is like an anniversary for us. 3 years it took to reach us to 10 episodes. That is a milestone for us. How to pick up girls? Don't pick up Be a girls. man. Uh, and Alt thanks man. for alt man. Yeah, don't be an alt man. No, 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 no. Then the No. population collapse will happen very fast. Uh,
इफ यू आर हियर, इफ यू हैव वॉच टिल हियर, यू नो व्हाट टू डू। हम उसको वापस से रिपीट करेंगे क्योंकि हमें कंफर्म कर दिया है यूट्यूब ने वही सेम चीज हर एपिसोड के एंड में बोलने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। शेयर बटन को थोड़ा लंबा दबाओगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, अगर आप लंबा। आईफोन यूजर हो तो। ये वो आप अपने व्हाट्सएप पे भेजो अपने फ्रेंड्स को, एंड आस्क शेयर देम करो, टू हमें ट्विटर पे बिकम। टैग करो एंड बताओ कि हमारी कोई अगर चीज़ें अच्छी लगी या बुरी लगी या हम पे हेट करना है वो भी कर सकते हो। हाँ, आई विल सी करो। यू ऑन माई हम रीट्वीट वॉर जोन। करेंगे, हेटफुल वालों को तो और रीट्वीट और करेंगे, और रीट्वीट करते हैं हम, और कोट थ्रेड रीट्वीट लिखूंगा मैं उस करके पे। बहुत लाइक पॉपुलैरिटी मिलेगी विवान की, हिंदू मतलब विवान की ऑडियंस से। 22nd January गाइज, वी वेटिंग। 22nd। बट या, कांट वेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हमारे 333 सब्सक्राइबर्स जो हमें देख रहे हैं। Thank you for being here, and we'll keep on making these kind of raw, unfiltered, unedited, क्योंकि budget ही नहीं है, videos. And yeah, until then, peace out, बाय। girls. I'll see you.